उसका एक फल हम सबको देखने को मिल रहा है, इसलिए उनको संतोष भाव मिलता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, उनके लिए प्राउड मोमेंट भी है, खुशी का समय भी है और एक तरीके से उल्लास के साथ सेलिब्रेट करने का भी सौभाग्य है। और जहाँ तक पेरेंट्स का सवाल है, उनके लिए तो विशेष खुशी का मौका है, क्योंकि जो सपने उन्होंने संजोए थे वो आज अपने आँखों के सामने देखने का उनको सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए उनको भी बहुत ही खुशी मिलती है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग जो आज डिग्री करेंगे वह समाज को एक दिशा भी देंगे और समाज को एक जो आप लोगों ने सीखा है वो आप सोसाइटी को वापस करने के लिए और टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए और मोटिव, सर्विस का जो मोटिव है उसको आगे बढ़ाने में आप सब लोग अपना योगदान करेंगे। ये बहुत ही बड़ा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है फॉर बेटर फ्यूचर और इसका आप सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बात ज़रूर आप सबसे कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट दिस इज़ ऑल्सो अ डे ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन का भी दिन है और इसलिए आप ऐसे मुकाम पर खड़े हैं where you have completed your education, although education never gets completed so long as you do not breathe your last. It's a continuous process. But still, one phase is over and in the second phase you are entering. इसलिए ये अवलोकन का भी समय है, आत्मचिंतन का भी समय है। When I was a student, when I was a student leader, I used to be very forceful in saying that education is our birthright. At that point of time, I thought that I was correct. But now I realize that basic education is your birthright. But professional education is a privilege which you get from the society. It can't be your birthright, but it is a privilege which you have got from the society. और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ध्यान में रखिए कि आपको इस सोसाइटी को वापस देना है। I would not like to count in numbers, but you should, at the back of the mind, it should be very clear to you that per student, per year, nearly 30 to 35 lakh is being spent on you. This means that the society, and this money is of the society, so we owe to the society and we have to respond accordingly. आपका टैलेंट, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट के रूप में आगे बढ़े हैं, आपने मेहनत की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मेहनत में बहुत लोग जुड़े हैं। उसमें गवर्नमेंट भी है, सोसाइटी भी है, सोसाइटी के बहुत से लोग हैं। आप याद कीजिए, you remember when you must have asked your colleague or your mess servant or somebody that wake you up at 5 o'clock and give you a cup of coffee so that you could study and do good in the examination. You remember कि आपको तैयार होने के लिए कितने लोगों ने आपका साथ दिया होगा, आपके फैकल्टी मेंबर्स ने आपके ऊपर कितनी मेहनत की होगी। ये सब चीज़ों का अवलोकन करने का और आत्मचिंतन करने का दिन भी है। इसलिए रिमेंबर दैट यू हैव गॉट नाउ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू शोल्डर। आपको बहुत से जिम्मेवारियों को निभाना है और सोसाइटी को उसके लिए देना है। आप अपने पेरेंट्स की जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन है उसको आप भूल नहीं सकते। उन्होंने किस तरीके से अपने आप को तकलीफ में डाल करके आपको आज यहाँ तक पहुँचाया है, उनका भी धन्यवाद करना है और उनको मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनके लिए सबसे खुशी का दिन है। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो रात के 11 बजे मैं मेस सर्वेंट को उठाता था और मैं कहता था कि मुझे खाना दो, एंड ही यूज्ड टू गिव मी फूड।
मैस का टाइम 7 से 9 था, मैं 11 बजे आता था और वो उठ करके देता था। क्या मेरे आज बनने में उसका योगदान नहीं है क्या? उसका भी योगदान है। So every member of the society has been contributing what you are today. And so I would also like to say that may it be supporting staff, may it be parents, may it be technicians, may it be faculty members, all have contributed for you to become today the doctor. And proudly here it will be said that we ordain the degree of MBBS to you on this date. ये संभव हुआ है क्योंकि बहुत से लोगों ने आपके साथ कंट्रीब्यूट किया है। दूसरी बात आपके बैक ऑफ द माइंड में मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि कई बार अखबारों में बहुत सी चीज़ें छपती रहती हैं और वो मेडिकल फ्रेटर्निटी को तकलीफ भी देती हैं और मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बहुत से प्रश्न भी खड़ा करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड दिस यू आर द एडवोकेट्स एंड यू हैव टू स्पीक अबाउट इट, that here in India, in 2017, we changed the health policy. Previously, we were only concentrating on the curative part of it. Now it is preventive. Now it is promotive. Now it is curative. Now it is palliative. Now it is rehabilitative. A holistic approach of health has been taken. And so at the back of your mind, it should be in your mind that you are not there only to cure, but you are also to see to it that you have to prevent from disease. Prevention is very important part of it. Promotion of health is very important part of it. And so you have to think in holistic terms. That is what I would like to share with you. One thing more I would like to say, that the government also, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, has taken a lot of initiatives. Previously, we had 6 All Indians of Medical Sciences. Today, we have got 22 All Indians of Medical Sciences. We have removed the regional imbalance and we have tried to give a balance so that pioneer tertiary care health institutions should be there at all parts of the country. And regional imbalance ko humne समाप्त करने की कोशिश की है. The same way, in just past 10 years, again under the dynamic leadership of Prime Minister Modi and the visionary leadership, we had only 387 medical colleges. Now we have got 766 medical colleges. We have increase in MBBS seats of 125%. We had 51,000 seats. Now we have got 1,15,000 seats. In postgraduate, the increase is 134%. We had 31,000 seats. Now we have got 73,000 seats. And our ambition and goal, as said by Prime Minister Modi on the ramparts of Red Fort, that we will have in next 5 years 75,000 more medical seats, and we are going to make it. So we are trying our level best to see to it that medical education becomes, more medical students come, and in medical discipline they contribute. And I feel that if in this right direction we go, we will be able to deliver the health system to the common man. That I would like to share with you. One thing more I would like to say is that never compare India with any other country. This also you should keep it in your back of mind. What happens is, वहां तो ये हो रहा है, वहां तो ये हो रहा है, और हम भी उसके advocate बन जाते हैं. You see, India is different. When you are becoming a medical education student, you should understand that you have to fulfill the aspirations of 1.4 billion people. This is the size of the population. You go to the West, if they see 20 patients in OPD, they say, I am done. I am done. But here, I really salute the doctors.
more than 100 patients OPD, and then after that VIP OPD starts. And that too also you cater. And after that you have lunch. Now this has got a positive aspect also, that you get patients. Your clinical side gets strengthened. But at the same time you have to deliver the services to them. And that is why I say that never compare. India had the corona vaccination program. Do we all know that it is the world's largest and the fastest vaccination program which India has done? 220,000 crore doses, double dose with booster. And we should be feel proud that America gives certificate of corona vaccination on a piece of paper, and India does it digitally. In your mobile, it sends the message as a certificate. This is digital India that we have to understand. I'm just talking about these things because these are the strong areas which the medical professionals should know. If we have been able to eradicate polio, it's not an easy task. 1.4 billion people. And every year we are having more than 2 crore children taking birth. और हम उसको maintain करके चल रहे हैं. हमको अगर वैक्सीनेशन में कोई सीवेज में भी कोई केस मिलता है तो उसको भी हम डिटेक्ट करके निकाल करके लाते हैं. This is the India's robust health system which we should feel proud of it. If we say about vaccination, if we say that we have done vaccination to 98%, it doesn't mean New Delhi. It means vaccination means going to the far-flung areas of Lahaul Spiti, Ladakh, Leh, Arunachal Pradesh, where it takes 2 to 3 days to reach to that village. And the population is 20, 50, 30, 40. If we have been able to do vaccination in Gadchiroli, if we have been able to do vaccination in Bastar, in Abuj area, we should understand that our health workers have gone there and seen to it. And that is why today it may be infant mortality rate or MMR, that has been reduced, and there has been a quantum reduction in all these things. So we have to understand that भारत ने बहुत, और आप लोगों के कंधों पर जो जिम्मेवारी है वो आप लोगों ने बखूबी निभाई है, लेकिन आप लोग उसकी चर्चा नहीं करते और मैं ही आपका एडवोकेट बनता हूं. मुझे इच्छा होती है कि आप भी इसकी चर्चा कीजिए. Nobody knows that a senior resident, आपने 12 घंटे की ड्यूटी सुनी होगी, 24 घंटे की ड्यूटी सुनी होगी, but you do duties for 36 hours. Senior residents, junior residents. Nobody, nowhere in the world could have even imagined that a doctor does a duty for 36 hours. But I've seen, I know that. So you have contributed a lot. And these are your strong points. And I would like to suggest that when you go to the profession and when you do your introspection, you should understand the responsibilities and the contribution which the health system is doing to the people of the country today. That we have to understand. One thing more, in the last I would like to say. Yesterday I was having a talk with the in charge of National Cancer Institute. He told me that when we do the bone marrow transplant, not only the patient, the staff has also to undergo for 10 days. He cannot come out. He has to stay there. No, nobody knows this, that for bone marrow transplantation, and the staff, although there is a regular system where duties change, but they have to stay there in the very vicinity of that area. That we have to understand. कोई किसी को इसकी चर्चा नहीं करता है. किसी को लाइफ बचा करके देना, बचा करके नई जिंदगी देना, ये कोई छोटी बात नहीं है. और इसीलिए मैं आप सबसे हमेशा निवेदन करूंगा, never expect a certificate from somebody else. You yourself judge your performance, you yourself improve your performance, and you yourself be satisfied. Whatever you have done, it's the best, and that is the best satisfaction that you are going to get. None other certification, none other can certify you. None other knows better than you.
You only know yourself. So you should feel satisfied whatever you have done, whatever input you have done. कोई दूसरा किसी को सर्टिफिकेट दे, ये संभव नहीं है. इसलिए कभी इसके आशा में मत रहना कि कोई मेरी पीठ थपथपाएगा. आपको अपने काम से संतोष लेना पड़ेगा और उसी में आपको सेटिस्फैक्शन लेना पड़ेगा. ये जरूर मैं आपको कहना चाहता हूं, तभी आप रास्ते अपने बुलंद कर सकोगे, ऐसा मुझे कहना है. अंत में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज बहुत खुशी का दिन है. आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई. आप आगे बढ़ें. सोसाइटी को आपसे बहुत आशा है, आप उसको आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में सफल हों, एक्सेल करें, रिसर्च में से एक्सेल करें, फैकल्टी के मेंबर के रूप में एक्सेल करें, प्राइवेट प्रैक्टिस में एक्सेल करें, गवर्नमेंट फैसिलिटी में काम करके एक्सेल करें. आपकी दुनिया अनंत है, उसमें आप बढ़ें. मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. धन्यवाद. Thank you, sir, for highlighting the importance of giving back to society through our education and the preventive, promotive, and rehabilitative aspects